then we concluded in such a way that with scientific approach, you are trying to solve a problem, but you are creating so many problems. But we also discussed that, but Vedas also giving solution to the problem. वो solution कैसा होता है? वो solution बस वो problem के लिए solution है. वो solution आप करेंगे तो दूसरा problem create नहीं होगा. So that we'll discuss today. So how is it? So today we'll start with this topic. We'll try to discuss about the difference between animal life and human life. क्या difference है? उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन लाइफ ऐसे देखा जाए तो ह्यूमंस एनिमल्स में एक्टिविटीज में देखेंगे तो बहुत सिमिलर ही है. Bodily activities, what we are doing in a more so-called sophisticated way or scientific way, but the activity is same. Maintaining the body, eating, sleeping. जो आवश्यकता है वही है जो जानवर को. Yeah. So that we'll discuss. So इस तरह से similarities तो है, but there is also a difference, which makes human life to be special compared to animals. And then we'll discuss about second topic, the solutions given by science and technology for problems in life. And then we'll discuss about the solution given by Vedic wisdom for the problems of life. And then we'll discuss what is actually information given in Vedas. How do we confidently with पूरे विश्वास से कैसे बोल सकते हैं जो भी शास्त्र में वर्णित है, जो भी विषय वो पूरा 100% करेक्ट है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं, कैसे बोल सकते हैं, ये हम उसमें देखेंगे. एंड देन विल कंक्लूड वेयर कैन आई गेट ऑथराइज्ड वैदिक नॉलेज. जैसे कल शुभम ने बोला था कि ठीक है शब्द प्रमाण तो ठीक है, लेकिन कलयुग में तो सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, तो फिर कैसे मिलेगा हमको ये जो ऑथराइज्ड वैदिक नॉलेज है, कैसे मिलेगा? So let us start with this topic, animal life and human life. So generally speaking, every living being in this world, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, कोई भी हो, the tendency is to search for happiness. कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य करेगा उसमें सुख ही देगा. अभी कोई कार्य कर रहा है उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, करने का मन नहीं होगा, है कि नहीं? मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा मैं, ऐसे तो टेंडेंसी होता है. सो एवरी मोमेंट वी आर सर्चिंग फॉर दैट ओनली. दैट इज अवर बेसिक टेंडेंसी. सो दैट्स व्हाई वी फाइंड हैप्पीनेस. Like some people, everybody has got different taste. Even in sports also, I'm giving some examples here. That some people like this kind of sport, they find happiness, that's why they do that. They like to play like that. And some people find happiness in these things: drinking, drugs, intoxication. Some people find happiness in dance, some people find happiness like this kind of stunts, flying, driving bikes. उसमें उनको इतना प्लेजर मिलता है कि वो प्लेजर के लिए वो कितना भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं. एंड देन दैट्स व्हाई लाइक वेयरिंग क्लोथ्स, तरह तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, वी डेकोरेट आवरसेल्व्स, हेयर स्टाइल्स भी देख रहे हैं. सो बिकॉज दे फाइंड सम प्लेजर आउट ऑफ इट, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग. सो जनरली स्पीकिंग, अभी हमने देखा सबका जो है उन टेस्ट अलग है, वो जो एक्टिविटीज करते हैं अलग है, बट ऑन द होल पर्सन वांट्स सम काइंड ऑफ प्लेजर आउट ऑफ इट. सो यहाँ पे जो प्लेजर, जो हैप्पीनेस मिल रहा है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, मतलब किस चीज को हैप्पीनेस हम समझ रहे हैं? हाँ, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन. या बट इन व्हाट वे? शॉर्ट टर्म और व्हाटएवर, बट थोड़ी देर के लिए पेन से रिलीफ देता. हाँ, इंद्रियों की तृप्ति कर, या दैट्स व्हाट. सो जनरली स्पीकिंग, हैप्पीनेस, इफ वी हैव नाइस फूड टू ईट, कभी खाने की कमी नहीं हुई, जो मुझे अच्छा लगता है वो मिल रहा है खाने को. हाँ,
नींद आ गई, सोने के लिए अच्छा व्यवस्था है, घर है वगैरह, हाँ, पीसफुल. एंड देन वी हैव नाइस, नो, family life and all. And then there is proper defense mechanism. कोई भय नहीं है. I am well protected, satisfaction in mind. Then person is said to be happy, you know. अभी ये चार चीज में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, then there is problem, है कि नहीं? Basic things. You know, these are the basic requirement for the body. You know, भूख लगती है, खाना है, then नींद आती है, sleeping, then mating. Everybody has got this tendency. And then defending, eating, sleeping, mating, defending. If these four are being done properly without any problem in that, then a person is happy. And then if you see animals also they also sleep. I mean, they have same kind of tendencies like we have. Like some videos here, like animals also, they also take care of each other. They also have got family life. Same tendencies animals में देखेंगे आपको. Like I can play this video. इसमें देख सकते हैं आप. The banks of the River Nile. These waters and banks are very dangerous. Many dangers have to be faced in order to raise young here. The species of bird you are watching has to build its nest on banks that are full of crocodiles. It moves very slowly and tries to avoid attracting the crocodile's attention. It particularly chooses areas where female crocodiles have left their eggs to build its nest. That is because female crocodiles are very calm and docile during egg-laying time and do not represent a danger to the birds. In time, the bird's eggs begin to hatch and tiny chicks emerge. Yet these chicks are in danger. As you can see, both the mother and father bird fiercely use their own bodies to shield their young and defy the dangerous lizard. The lizard might kill the bird, but the bird is ready to die in order to save its chicks. The lizard gives up in the face of the bird's determination and courage. Things change when a hungry and aggressive male crocodile approaches the nest. The chicks freeze. The mother bird puts on a different display this time. She opens her wings and beats them on the ground. She does not directly oppose the aggressor. On the contrary, she imitates an injured bird and invites the aggressor to attack her. She thus attracts the danger away from the nest. The deception works. The crocodile follows the supposedly injured Here bird is a and family moves... affection, mother and father taking care of the children. In animals also we have. And then they also have fun. This is also a video. If time permits, I can show, but like dolphins, there are so many creatures, some birds. They also have tendency to have fun, and then they have family life, protecting each other. इसमें ये वीडियो में एक्चुअली क्या है, lions, they attack the one wild boar, and then all the boars they come and protect them. Lions को भगा देते हैं. A group of lions ambush an elderly buffalo that has moved away from the herd. It looks like death will be the inevitable result. But a miraculous event takes place.
The elderly buffalo's cries for help reach the distant herd. They at once head for the scene. Then courageous buffaloes approach the lions in a threatening manner in order to rescue their companion. And the lions flee. The buffalo gather around the injured animal and try to raise it to its feet. Minutes pass. Things look hopeless for the exhausted buffalo. The lions are still waiting in ambush. Believing it to have died, the last few remaining buffalo begin to move away. And yet, another miraculous event takes place. The injured buffalo cries out one more time, as if asking them not to leave it. The herd immediately come back. The buffaloes once more see off the approaching lions. With a final effort, the elderly buffalo rises to its feet, and mingling with its rescuers is lost from sight. Animals bhi hai. Family affection, taking care of each other. So not just humans, the same tendencies we have, animals and humans. And now the question is, then humans or animals, the difference kya hai? So, and if you see in these 4 activities, eating, sleeping, mating, defending, actually animals are much better than us. Like we cannot compete animals in these 4 activities. Eating, we cannot compete animals. Like elephant, a human cannot compete. Sleeping, a polar bear. एक बार सो गया तो 6 महीने तक उठेगा नहीं. Cannot compete. Mating, we get only maximum 1 or 2 children. But animals, dozens of children. So much capacity they have got. Defending, हम अपने आप को defend करने के लिए we need weapons, we need so many things, so much arrangement. But animals, they have everything in their physical body. You know, we cannot directly go and face some wild animal. So they have got better facilities for this. So, what is the difference between animals and humans? So, eating, sleeping, mating, and defending, these are similarities. So, here the question is, these 4 things are common in humans and animals. Just like, this slide में क्या है? Question is that please try to tell some qualities in the species which you are displaying. Special qualities, like eagle. What we have special quality in it? Eyesight, yeah. Horse. The power in the legs and whatever. Yeah, power. Yes. Dog. Smelling power. And also faithful. Loyalty. Elephant. Yeah, physical strength. Bear. Again, power and dominance. Dominance. And also smell also, like dog. Yes. It can smell till 1 kilometer distance. क्या है? कोयल शायद. Sweet sound, voice. So every species has got some different special quality. So in eating, sleeping, mating, defending, animals have got rational power and intelligence, and they're better than human beings. So what makes a human different and special in comparison to an animal? Now in this way, if we discuss, अब human being को animal से कैसे हम separate करते हैं? बहुत लोग तो generally बोलते हैं humans, we are just animals. But are we simply animals? Humans have mind. But we saw animals also have not. Partial part.
Yeah, that can be difference. Animals do not. Anything else? Maybe that can be the only difference. Humans can work accordingly to make their upcoming births more peaceful, Yeah. but animals can't. They don't They have can any. only think till this birth. Therefore, adapt. Now, if we see our present modern world, now mostly Western countries in the science and technology, they have advanced. They have almost reached the summit of material advancement. They have got everything for enjoyment. क्या हुआ? हाँ. So जैसे अभी हमने देखा कि एंजॉयमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए जो जो चीज चाहिए हमको, तो हम अमेरिका, यूरोप में देखेंगे तो वो सब ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है. एवरीथिंग दे हैव. And we are called, like, still we are developing. We are not yet reached to that status. So they have got luxurious house to live in, you know. कुछ भी कमी नहीं है उनके पास. Big big skyscraper buildings रहते हैं. And then Better defense systems. and also, yeah, this is defense system in this photo. And I have एक चीज में देखा था, मैं घर था. हाँ, अमेरिका में एक ऐसा शहर है, वहां पे हर व्यक्ति के पास हर घर में एक प्लेन होती है. अभी अभी हम बाहर जाते हैं तो यूजुअली बाइक वी यूज, एंड यूजुअली पीपल हैव गॉट कार्स. एवरी पर्सन हैज गॉट कार. बट इन वन सच सिटी is so nicely designed that every home, they have got a small plane, domestic plane. Even to purchase, you want to go market, they just fly to some other nation or easily. They have got such rights. No, everything they have got. Recently, मैं college में था देखा. Recently मतलब कुछ साल पहले. And then mode of communication also very nicely advanced. So in this way, another question. कुछ दिख रहा नहीं इसमें. So question is human being only a deluxe edition of animals, or is he anyway superior to animals? अभी जो भी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं, अच्छा घर में रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से डिफेंस मैकेनिज्म, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सो वी आर डूइंग इन अ काइंड ऑफ using much more technology, different machines, equipments use करके. और animals, they also do the same activity but appear to do in a simpler way. They don't use, they cannot make all this. Sense of minimalism. Yeah. Do it in the minimal way. Yeah. Like communication, they also have got communication. Like dolphins. Dolphins can communicate with each other even for so many miles. We use telephone, but they don't use telephone. They can communicate with each other. Mind. हाँ. अभी एक एक समुद्र में एक जगह पे एक डॉल्फिन है, कितने किलोमीटर दूर दूसरे डॉल्फिन है. They can communicate. They have got that much capacity. That you cannot understand. Waves and Yeah. sonar and जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे ना कि हम तो कुछ साउंड हम सुन सकते हैं, लेकिन जो जानवर सुनते हैं वो हम नहीं सुन सकते. जैसे डॉग्स, द कैपेसिटी इज मच मोर हायर फ्रीक्वेंसी, वो हम नहीं सुन सकते. तो दैट वी डोंट नो. Yeah. Yes. So now here, in spite of all this advancement also, in Western world especially, just like in 1960s when Prabhupada went to America, what was going on there? Hippie movement. By that time only they have got so much technology. Everything they have got. There was nothing like poverty. Everybody was very rich. But still, what Prabhupada saw, people are like hippies, lying on the roads, completely drunkard, intoxicated, full of stress, anxieties, So why all these things? They are not satisfied. They are full of anxiety, full of stress, depression. कोई भी खुश नहीं था. तो फिर क्या कमी हो गई? खुश रहने के लिए जो जो चीज भी चाहिए, सब कुछ तो है उनके पास. वैसे भारत देश में नहीं, भारत देश में गरीबी था उस समय, बोल सकते हैं. बट इन अमेरिका इट वाज नॉट लाइक दैट. But there people were not happy. So what was missing? Technological advancement helps man enjoy better luxuries for better eating, sleeping, mating, depending, without offering any ultimate aim of life. That's why in those days, in 1960s, they started this Hippie Movement, because they were like, they have got everything. They have got enough wealth. They have got enough big restaurants and all, everything to enjoy.
but still there was no ultimate aim of life. That's why usually in those times, young generation, they were tending to, spiritual aspect of life. We want to know the aim of life. What is the meaning of my life? That's why they are hankering, you know. And that's how they got attracted when Prabhupada came. And not even Prabhupada, even before Prabhupada, so many people went from India. So in this way, if you see, previous slide में वो बोल रहे थे कि eating, sleeping, mating, depending. मतलब to fulfill bodily needs, you have got so many things. Everything is there, but there is no ultimate aim of life. So it's simply like an animal life. Animal also doesn't have any aim. Huh? What makes human being superior to animal? So if you go to Vedic wisdom, महाभारत में बताया गया है आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान. The activities of eating, sleeping, mating, and depending are common in animals and human beings. But the human beings are considered superior only when they inquire about God and perform dharma of obeying that his laws, loving and serving him. Otherwise, they are considered just like animals. Dharmena hina pashubi saman. So, animal, it has got intelligence, but with that intelligence, it can inquire only about eating, sleeping, mating, depending. But whereas human being, with his intelligence, he can inquire about what is life, what is death, and how to go beyond. Whereas animals, उतना capacity नहीं है उनके पास. This is the difference. So human beings, with their higher intelligence, they can find out the causes of the sufferings. अभी जैसे हमने वो वीडियो में देखा कि the lions are attacking and they are able to sense that our fellow buffalo is in trouble. They are coming and protecting. Okay. But they cannot inquire why we are in such a trouble. Why this lion is coming and attacking us? You know, how to put a full stop to this suffering? How can we make our life in such a way that there will be no problem in life? They don't have that much capacity, but we have. We can inquire and we can find a solution. We can inquire about the purpose of life. We can inquire what for my life is meant for. Why am I suffering? मैं तो खुशी रहना चाहता हूँ, लेकिन जितना भी प्रयास करो खुश रहने के लिए उतना विपरीत हो जाता है. I am struggling hard to be happy, but too much against my wish, I face so many problems, so many losses, so many disturbances in my life. So what is the purpose? Why this world is there? Why my life is there? And who is God? All these things. In this way, how can I attain eternal happiness? So this chance we have got in this human life. So in this human life, if we inquire about this eternal truths, then we will be promoted to higher life, where there will be no problems, eternal happiness. If we don't inquire, then we'll be again degraded to animal life, where they don't inquire at all. They simply suffer. So we have that reasoning power. So we have to use that reasoning power to ask these questions. Why am I suffering? And what is the goal of life? So if a person, although human being, if he's not getting this question, why am I suffering in this life? That means he's not human being. उसको क्या बोलेंगे हम? द्विपाद पशु, दो पैर का जानवर बस. Human being नहीं है वो. Because according to scriptures, human being means naturally he gets this question. Why am I suffering? Like अभी इस जमाने में तो ये चीज बोलेंगे लोगों को जनरली that this life is actually दिखता है कि we are happy for some time, but that is only temporary. Mostly life is composed of only suffering. People will not believe. शायद आपके जीवन में होगा, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ. मुझे क्या सफरिंग है? ऐसे बहुत लोग हैं, मैक्सिमम लोग. भले ही वो सफर होते हो, but still they hide that suffering and pose as if they are very happy. Like what kind of sufferings we have got? Varieties. Everybody has got some problems. Either
their own mental problems, their own physical problems, or problem with money, आर्थिक समस्या या किसी और के साथ समस्या या तरह तरह की समस्या। अभी जैसे बहुत गर्मी है, अभी जैसे मैं साउथ इंडिया से आया, वहां पे उतना नहीं था, यहाँ पे आया तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एवरीडे हेडेक हो जाता है मुझे ये गर्मी से। सो एवरीवेयर एवरीबॉडी सफरिंग विद प्रॉब्लम्स। सो अ ह्यूमन बीइंग सो जो रियली ह्यूमन बीइंग है, रियली मनुष्य है, मतलब जिसका जो अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो क्या सोचता है, अब ये सब तो प्रॉब्लम्स है, तो कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाट इज एक्चुअली द रियल प्रॉब्लम इन माई लाइफ। ये तब तो ठीक है, आता है जाता है। मनी प्रॉब्लम, मनी नहीं है, गरीबी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बीमार हो गया, कोई ऐसे ऐसे, तो ठीक है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, इसका रूट कॉज क्या है, ही विल सर्च फॉर दैट। सो हियर he will inquire about what is actually the real problem in my life. If I can solve the real problem, then all these temporary problems will be solved. Uh, so what is the real problem? It has got three criteria. A real problem is common to all, nobody wants it, and nobody can avoid it. A real problem is a problem said to be a real problem, which is common to all. Nobody wants it, and nobody can avoid it. Yeah. Death, one problem. और जन्म चार के चार बोलते, जन्म मृत्यु चार। Nobody wants it, nobody can avoid it. Yeah. Yeah, old age. Everybody wants to remain young, but there will be old age. That's why this cosmetic industry is flourishing, because nobody wants to remain old. You know? Even now also, अभी जो famous actors है cinema के, they already became old. They cannot work, but still with this technology and cosmetics से ऐसा makeup करेंगे कि they again remain as young. You know, so many are there. अभी जैसे but he was world viral winner and then तो वही है ना but दिखावा चाहते हैं ना। physically they were not old but internally he was old. He is actually, the body became old, but he doesn't want to remain old. He always wants to remain young. हाँ, What is profit? ये फायदा क्या हुआ? अभी जैसे यंग था तो बहुत लोग फैंस बन गए थे, बहुत अच्छा नाम कमाया था। अब ओल्ड है तो कोई देखता भी नहीं है, इसलिए यह मेटेरियल प्लेजर, उसमें तो प्लेजर आता है ना, सटल प्लेजर। somebody is appreciating you, glorifying you, वो कितना अच्छा दिखता है, कितना सुंदर है, और पूरा भद्दा लग रहा है, बहुत भी ब्यूटी ही नहीं है उसमें, कोई देखता ही नहीं है, तो फिर and that's why another reason also, after they become old also, they try to treasure their past memories. जब मैं जवान था, देखो कैसा था, वो कभी आएगा नहीं। So this is the fact of life. Our body grows. That's what Krishna is telling in Bhagavad Gita. Dehi nosmi nadade kaumaram yovanam jara. And eventually about death, the body becomes just like decomposed or bones मिल जाते हैं बस. This is a fact. So old age, one reason, one real problem. And another real problem is everybody wants to remain healthy, but we cannot avoid diseases. You know, varieties of diseases. कब कुछ क्या हो जाता है हमको पता ही नहीं चलता है. That is also another fact. That is real problem. Second real problem. So old age, disease, birth and death. These are the four real problems. कोई पूछता है अभी बर्थ कैसा रियल प्रॉब्लम हो गया? बर्थडे तो हम एवरी ईयर मनाते हैं, कितना हम खुश होते हैं, बट बर्थ इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. हाउ? You know, yeah, हाँ, okay, but before coming to this world also you are there for so many months in the womb. What about that condition? It's much more miserable. Just imagine
हमको आज मुझे पूरा फोल्ड करके एक थैले में बांध दिया है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ एंड देन फुल्ली सफोकेशन, आई कैन नॉट ब्रीथ, कुछ भी नहीं। और कहाँ पे है वो कंडीशन? मदर्स वूम। क्या रहता था? स्टूल, यूरिन, फ्लैश, ब्लड, बहुत ही बैड स्मेल आता है, सफोकेशन, एंड देन और उसमें बैक्टीरिया वगैरह वो कीप ऑन बाइटिंग बिकॉज द न्यूली ग्रोन बॉडी बहुत ही फ्रेजाइल रहती है स्किन। एंड देन if mother drinks for example very hot milk, it's like burning, we are in fire. Such a situation for 9 months we are there. It's full of suffering. So science, because after the research they are able to explain what is happening in the bird in the womb, but we have information in Bhagavatam third canto कि एक माँ के गर्भ में जो वूम होता है वो कैसे डेवलप होता है from the beginning stage, from the time of intercourse, from that time how the womb is forming, the sperm and how they mix, and then how the embryo forms, embryo develops, then how a body is formed. Everything is nicely developed and described. And each and every moment, the living being who is there in the womb, what kind of attitude he has got, what is it thinking? आप कुछ बोल रहे थे? But in the womb, how can he feel the pain? Science is not real. Consciousness is already there. Consciousness is there in womb. See, that's what we'll discuss this topic in the next session. This is what in our modern studies, what we are studying. What is life? Life means अभी मेरा जन्म हुआ. When the body is fully developed, came out of the womb. From that point, we feel that मेरा जन्म हो गया. Because the whole understanding is that who is the living being? This body. But the living being is not the body. Soul within. The soul is there. Because the soul is there, then the body is developing. अभी बहुत सारे कैसे होते थे कि कुछ लोग होते हैं ना, how much ever they try, but they are unable to give birth to children. Soul is not there. Getting the point? How much ever you try? Huh? Because soul did not enter in the womb of the mother. कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है womb में. Miscarriage, there are so many reasons. Like बेबी वो बर्थ के बाद अच्छा नहीं है तो अपने आप को खुद को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. नहीं, अपने आप को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है. अभी यूजुअली मॉडर्न डेज में तो हमने अबॉर्शन देखते हैं. दे किल दैट fetus inside the womb, and miscarriage is like नहीं, कोई गलती नहीं, सबका कुछ कारण होता है. अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे द कर्म सिद्धांत, कर्मिक रिएक्शन. Mother has fallen and then some injury has been ऐसा भी होता है. दीदी का miscarriage हुआ था 3-4 महीने पहले. नहीं, उसका सब कारण होता है. बेसिक कारण यह है कि अभी उसका मिसकैरेज हो रहा है तो बिकॉज अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, like this concept of karma, karmic reaction, whatever happens with us, who is responsible? We are only responsible, because the way we did activity in our past, that we are suffering now. The result we are suffering. इसी जीवन में कि पिछले जीवन? हाँ, पिछले जीवन में भी. Because we are not the body, we are the spirit soul is always living. This concept we'll discuss in the next sessions. The science of soul and then science of or karma and all. So the karmic reaction. अभी जैसे हमने इतना घोर पाप किया कि the reaction is that the result is that you are not qualified even to see the sunlight. तो वो में तो आ गए, but you will leave body there only. ऐसे कितने बार होगा? The explanation is there. सोल कब आता है मतलब एम्ब्रियो की बॉडी में? Time of intercourse. Yeah. Yeah. In Bhagavatam there is a shloka. Karmana daiva netrena janturdehopatte. Second line I forgot. In that only it is telling that depending on our activities in this life and depending on the consciousness we developed, so accordingly the nature's laws are working, and according to the laws
the soul will be transferred to another, womb of different species, depending on the consciousness and our qualification. So how it is transferred? Through the male. इसके यहाँ से जो sperm से जो जाएगा ना, semen, through that only is going. In Bhagavatam we find clear description. Yeah. So in Bhagavad Gita here, Krishna is telling in 13th chapter, Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Dosham Darshanam. Who can perceive birth, death, old age and disease are real problems is in knowledge. So अभी मैंने बोला था कि रियली जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, he will go to the root. जो भी टेम्पररी प्रॉब्लम्स है उससे लेना देना नहीं है. अब ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हूँ, सफरिंग सिचुएशन में हूँ, कारण क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम तो यही है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज. Because of this only remaining else problems are coming. Financial problems हो या health problems हो या different problems. The whole root cause is this. So who has understood this point is in knowledge. Krishna is telling. Okay, अब ये 4 हो गए ना problems. And apart from this, whole lifetime we are always tormented with many sufferings. They are classified into 3 kinds. One is suffering because of our body and mind. That is called आध्यात्मिक क्लेश. क्लेश मतलब suffering. आध्यात्मिक क्लेश मतलब suffering due to our body and mind. Like here example, mental stress, tension. उससे क्या है, यूजुअली कैसे स्टार्ट होता है, माइंड से स्टार्ट होता है. जब माइंड फुल एंजाइटी में बढ़ जाता है, स्ट्रेस में बढ़ जाता है, तो बॉडीली प्रॉब्लम्स होता है. स्टमक प्रॉब्लम होगा या हार्ट प्रॉब्लम होगा. ऐसे बहुत केसेस हम देखते हैं. दिस इज कॉल्ड आध्यात्मिक क्लेश. मॉडर्न यूथ तो हम देखते हैं. मैं कॉलेज में था तब, IIT ट्रिपल IIT हैदराबाद में था, तब मेरे कोई फ्रेंड्स थे तो वहां से सुनता था कि IIT ट्रिपल IIT for us it was like very esteemed college. Everybody dreamed to join in that. और एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत टफ होता है. लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत ही स्ट्रेस होता है, बहुत ही स्ट्रेस, इतना भयंकर. IIT में तो कैसा अरेंजमेंट है कि आपको देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सरप्राइज टेस्ट. आपको पहले बोलेंगे नहीं कि आपको एक एग्जाम रहेगा, कब रहेगा, कौन सा एग्जाम रहेगा पता नहीं, सडन आपको मैसेज आएगा कि इस समय आपको एग्जाम है, रेडी हो जाओ. और डे टाइम में नहीं, नाइट टाइम में भी करते हैं. अभी आप सो रहे होंगे हॉस्टल में, सडन आपको मैसेज आएगा. ऐसा पहले बताया रहेंगे कि रात में भी रह सकता है, दिन में भी रह सकता है, तो वो टेंशन से आप सो भी नहीं पाएंगे. इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं. अगर प्रैक्टिकली मैं देखा, एक बार मैं मेरे फ्रेंड को मिलने गया था IIT हॉस्टल, तो उसने बोला कि मैं ये टाइम में फ्री रहूंगा, आ जाओ आप. तो गया शाम को 4 बजे, तो उस समय सो रहा है वो. उठा के पूछा क्या सो रहा है, अरे नहीं कल रात में 11:30 को मैसेज आया कि एग्जाम है. तो मैं सोया ही नहीं, एग्जाम दिया और बाद में नींद ही नहीं लगा मेरा. तो इस तरह से तो क्या करेगा स्टूडेंट, इतना स्ट्रेस कैनॉट हैंडल. हु इज हैंडलिंग ओके, बट मोस्ट ऑफ देम दे कैनॉट हैंडल. इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है ना. एक तो घर से कि आप अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, तो फिर एक प्रेशर रहता है. और देन पीयर पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स की तरफ प्रेशर, और मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो समाज में क्या दिखाऊंगा मैं अपना मुंह, ये एक प्रेशर होता है. देन ही विल कमिट सुसाइड एंड समथिंग लाइक दैट. How to deal with that? Yeah, how to deal with that? First of all, yeah, that will come next session. When you understand that we are not the body, we are spirit, soul within. With this only, maximum stress is gone. अभी से जब तक इस बॉडी की नीड्स भी सर्वाइव करनी, हाँ करनी है. या बट स्ट्रेस कब आता है? अभी जैसे एग्जांपल, अभी एक व्यक्ति बहुत ही कष्ट उठा के बहुत पैसे कमाया और लाखों रुपए खर्च करके एक बड़ी कार खरीदा, उसके पैसे से, किसी का बोरो नहीं किया, किसी का लोन नहीं लिया, खुद ही कमाया और लाखों रुपए खर्च करके एक बड़ा कार, कोई भी मर्सिडीज समझ लो या कुछ भी समझ लो, फोर्ड का समथिंग. सो पहले दिन कार खरीदा और क्या रहा है घर को, हाँ घर को ला रहा है, ट्रैफिक में जाम हो गया,
हाँ, और तो इंडियन रोड्स तो कोई बाइक वाला या साइकिल वाला आके ठोकर आके चला गया, एक छोटा स्क्रैच आया कार को, उसको बड़ा धक्का लग गया। क्यों लगा? उसको तो कुछ नहीं हुआ, कार को हुआ है ना। वाई इज गेटिंग डिस्टर्ब? बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट। मैंने इतना कष्ट करके मेरी कार, ये मेरी कार, ऐसे कैसे हो गया कार को? उसका हार्ट फेल हो जाएगा उधर। कार को हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? कार is different, he is different, but he is getting affected when the car is getting damaged because of that attachment. So we are suffering because of this problem, because our whole understanding is that I am this body. सबकॉन्शियस माइंड में तो यही है। सो सब है कि वो अटैचमेंट तो है, तो इसलिए बॉडी को कुछ होता है, माइंड को कुछ होता है, तो मुझे हो गया। तो यदि आप जो रियल अंडरस्टैंडिंग है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, ये समझ जाएंगे ना, देन कुछ भी हो जाए संसार में डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपकी एक्टिविटीज आप अच्छे से करेंगे। तो ये नेक्स्ट सेशन में टॉपिक आएगा। So one kind of misery is, we saw misery due to body and mind. Another is आदि भौतिक क्लेश। दूसरों की वजह से हमको कठिनाई होती है, चाहे दूसरे व्यक्ति हो या मच्छर हो या कोई इंसेक्ट हो। दिस इज आदि भौतिक क्लेश। लाइक आतंकवादी या सांप या so due to other living entities. This also we cannot avoid. And next is adi devik clash by natural disasters. These are not in our hand. Like भूकंप आ गया, बहुत गर्मी हो गई, हाँ, या तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल. So in this way, if you see, our whole life is composed of only miseries. So now here point is, in modern science, we have been advanced so much, in medical science and all. बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी है, बट स्टिल कितना भी एडवांसमेंट हो, वी आर अनेबल टू पुट फुल स्टॉप टू दिस प्रॉब्लम्स. एक डिजीज सॉल्व हो गया और एक नया डिजीज आता है. अभी जैसे पास्ट में एक डिजीज था, स्मॉल पॉक्स, इट इज नो मोर नाउ. इट डजंट मीन दैट देयर विल बी नो मोर डिजीज. जैसे कोरोना आ गया, अभी अब ये सॉल्व हुआ, नया कुछ आएगा, है कि नहीं? जैसे एग्जांपल, ही इज मोहम्मद, चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन. नाउ ही इज सफरिंग विद पार्किंसन डिजीज. That I don't know. He's alive now. So इतना strong person, now he can't even lift a cup of coffee. Almost like paralysis, Parkinson disease. What is Parkinson disease? Parkinson मतलब ये मतलब almost like paralysis. पूरा बॉडी के पार्ट्स काम नहीं करते, बॉडी के पार्ट्स काम नहीं करते, पूरे वीक हो जाते हैं. You cannot control your hand. जो भी शक्ति था सब चला जाता है. So ऐसे बड़े बड़े लोग, कितने भी बड़े बड़े क्यों ना हो, everybody has to suffer. And in order to solve that suffering, we use temporary solutions. जैसे पेन किलर्स वगैरह वगैरह. हाँ, सफरिंग. ये फोटो बढ़िया है, ये मुंबई का फोटो है, आज का नहीं, कुछ सालों पहले. तो ट्रेन पे कितने लोग खड़े हैं देखो. ये बिहार का शहर है. या ऊपर वाला मुंबई से. ऊपर वाले तो बिहार में आज चले जाइएगा, भैया आपको रेलवे स्टेशन ये लोग पटरी पे आके हाथ दिखा देते, रोकने पड़ता. नहीं, अभी एक्सीडेंट हुआ था तो ठीक है. मैं हैदराबाद में जब बीटेक पढ़ता था ना, तो कॉलेज जाने के लिए मेरे घर से कॉलेज 25 किलोमीटर्स. नहीं, ट्रिपल आईटी नहीं, आई वाज स्टडीइंग श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SNIST. सो एवरी डे आई यूज्ड टू गो 25 किलोमीटर्स इन बस. अब वही रोड पे बहुत सारे कॉलेजेस है, आउटस्कर्ट्स इन सिटी. तो एवरी डे बस पूरा क्राउड हो जाता था.
कॉलेज बस भी होता था, लेकिन इतना फीस कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए गवर्नमेंट बस, पब्लिक बस में जाते थे। बहुत क्राउड हो जाता था। सो ऐसे 2-3 इंस्टेंस है। कभी कभी तो हम क्या करते थे, बस में चढ़ने का जगह नहीं है, टाइम हो रहा है, तो बस पे पीछे चढ़ जाएंगे, ऊपर बैठ जाएंगे। तो ऐसे करके जाते थे, बहुत रिस्की है वो। और एक बार क्या हुआ था, बस बहुत क्राउड हो गया और बाहर लटक रहे, ऐसे ट्रेन में देख रहे हैं ना, बस पूरा लटक रहे, 1 घंटे का रास्ता। हाँ। और इतना क्राउड होगा तो और धीरे चलेगा, 1.5 घंटे लगेंगे, 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो कितना देर तक पकड़े रहेगा वो, हाथ सुन्न हो जाएगा, नहीं तो कुछ तो हो जाएगा। तो ऐसे ही एक लड़का, छूट गया उसका हाथ, बस चल रहा है, छूट गया उसका हाथ, नीचे गिरा और रोलिंग रोलिंग। हम तुरंत ऐसा लगा तो पीछे देखे हम, मैं अंदर बैठा था, पीछे देखा कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, रोलिंग रोलिंग, और रुक गया, ऐसे उठ रहा भी नहीं है। तो हम बस को मारते गए, ड्राइवर को रोको रोको रोको, लड़का गिर गया है। वो रोक रहा ही नहीं है। मुझे क्या मतलब, मुझे तो जाना है। एक साइंटिस्ट बोला, in this quote you see, now man can fly like a bird in the sky and swim like a fish underwater, but he cannot walk on land because of pollution. You see this, क्या है माउंटेन्स ऑफ टायर्स? जैसे ये टायर्स वैसे मुंबई साइड आप जाएंगे तो माउंटेन्स ऑफ गार्बेज पूरा। हाँ, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, वो डिकम्पोज भी नहीं होता है, उसका कुछ कर भी नहीं कर सकते। आउटस्कर्ट्स में पास है। हाँ, माउंटेन माउंटेन पूरा पहाड़ बनाया है गार्बेज का, उसके ऊपर घास हो गया है। हाँ, या इस तरफ ही मैं भी देखा था परसों एक बार। अर्बन साइड जाओ तब कानपुर। Science has invented bombs that can only blast living bodies into pieces, cannot create life. So we'll just say some problem and what scientific solution we have. Like now we saw aging, old age. So white hair आ गया, तो उसको कवर करने के लिए फेल डाई इस्तेमाल करेंगे, wrinkles के लिए फेस लिफ्ट इस्तेमाल करेंगे, हाँ, pain relief and all. So what is all this? It is not actually solution. It's like a patchwork. No, it's not actually solution. Breathless and death, use oxygen tubes. So ऐसे पैचवर्क कब तक करेंगे हम? प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं। जो भी लाइन से ऊपर है दिखाई नहीं दे रहे। सो यहाँ पे पॉइंट है, हाउ लॉन्ग यू विल फूल द पीपल बाय पैचवर्क सॉल्यूशन, रियलिटी विल बी सून रिवील्ड. So this science and technology we have seen till now so far, that how much are we advanced, but we cannot stop old age, we cannot eradicate the disease from this planet, and we cannot, it doesn't have any understanding about life and death. So in this way we are seeing that this science and technology, it is providing okay luxuries and comforts, this technology we are using now, but it is not satisfying the soul within. The suffering जो है inside, it is not gone. So इसको explain करने के लिए एक एनालॉजी है। अभी जैसे आप फिश को पानी से बाहर निकालो और उसको जीवित रखने के लिए कितने फैसिलिटीज दे दो आप, खाने के लिए अच्छा अच्छा आइटम, एयर कंडीशन अपार्टमेंट, सब कुछ, जीवित रहेगा क्या? वाटर चाहिए। द सेम थिंग, we do not belong to this world at all as spirit soul. Like fish belongs to water. So artificially we are trying to make ourselves happy in a foreign environment, which is not our innate environment. समझ में आ रहा है? Like fish, artificially you are trying to make fish happy, but it cannot remain happy. It will not even live properly. Same way, the soul can only be satisfied and happy in spiritual world, which is its natural home, just as fish will naturally be happy when put back in water. So who is wise and who is foolish? A wise is a person who believes in God, and foolish doesn't have any faith in God. A wise is a person who lives life according to laws of God.
Now, why we are facing so many problems? We are advancing science and technology, but why we are creating so many problems? Because we are not going according to the laws of God. We are not going according to nature. Like for example, अभी एक प्रॉब्लम का डिस्कस किया था कि पॉवर्टी और खाना नहीं मिलता है, स्केर्सिटी ऑफ फूड, ड्राउट्स एंड फैमिन्स ये हो रहे हैं अभी। जैसे हम आज अभी के टाइम की बात कर ले, जैसे चाइना में हैवी पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए बहुत बड़ा डैम बनाया है। या वो डैम इतना ज्यादा बड़ा बन गया और मतलब बनाया गया है कि वो बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर सके। हाँ, तो उसकी बहुत ज्यादा वेट और वो बहुत ज्यादा पानी रोक रहा है नदी के फ्लो का, उसकी वजह से अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो डेविएट हो रहा है, जिसकी वजह से अर्थ की घूमने की गति कम होते जा रही है। ये सुनने में भी अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा अजीब है और वो सही भी नहीं हो सकता क्योंकि नहीं, डैम बहुत ओवर डैम से बड़ा डैम। अच्छा अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम ये भाखड़ा नंगल डैम से भी बड़ा है। वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। कुछ नहीं जैसे हो सकता है कि मतलब कभी कभी 50 कभी 70 एनीवेज, अभी आपको वेदा से फैक्ट्स बोलेंगे ना और चौंक जाएंगे आप। वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि साइंस के हिसाब से क्या बोलते हैं कि अर्थ इज मूविंग बट वेदा डजंट एक्सेप्ट दैट। या अर्थ इज फिक्स्ड। प्रैक्टिकली लॉजिकली भी सोचेंगे तो इट इज लॉजिकल। एवरीथिंग को सब मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रही है, सन भी मूव कर रहा है, सोलर सिस्टम भी मूव कर रहा है, गैलेक्सी ऐसे बोलते हो। यूनिवर्स भी मूव कर रहा है। हाँ स्पाइरल में चलता है। हाँ, अर्थ जिस लोकेशन पे उस पे कभी भविष्य में वापस नहीं आएगा, ना ही सन की लोकेशन। बट ऐसा कुछ नहीं है डिस्क्रिप्शन वेदास में। रिलेटिव मोशन तो हो रहा है। No, after this sessions we'll take one topic called cosmology and we will discuss in that. We'll compare modern understanding and what is there in scriptures. It is a big concept. अभी स्टार्ट करूंगा आर्गुमेंट तो अभी टाइम भी नहीं हो गया ऑलरेडी। No, it is not question of belief. That's what we discussed yesterday. अपने अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करेगा इधर। See, you don't have, अभी कोई एक्सेस ही नहीं है। अभी जो भी शास्त्र में बताया है वो सही है गलत है वो प्रूव करने के लिए भी आपको कोई एक्सेस नहीं है। आप जाके देखेंगे वो कैपेसिटी नहीं है। So just accept. Beyond the learning capacity of Yeah, it's beyond our learning capacity. उसके मान लो। अभी जैसे वो जो भी थियरीज है we can accept that whatever they are telling may be wrong because they are trying to understand these facts about the solar system and all through their own efforts. They are creating their own telescope. They are creating their own instruments, and through that they are seeing. Definitely, they may fall into illusion. They may do some mistake. But Vedas are not like that. Vedas तो clear description है। और मैं आपको वो भी बताऊंगा वो क्लास जब हम डिस्कस करेंगे कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि सोलर सिस्टम में सन इज आल्सो मूविंग along with all the planets and individual speaking planets are revolving around sun. That is modern concept. But if you go not just Vedas, if you go to the previous concept of Chinese explanation about cosmology, Egyptian, Greece, जो भी ancient philosophies है, they also match what Vedas थे। जो भूलोक का जो description है वो same match होता है। We have information. अभी जैसे अपने पास ऊपर फ्लोर पे आप देखेंगे तो गोलोक का चार्ट, मंदिर में आएंगे तो एंट्रेंस पे ही बड़ा गोलोक का चार्ट है, उसमें डिस्क्रिप्शन है। द डिस्क्रिप्शन इज अकॉर्डिंग टू वेदास, सो यू कैन स्टडी व्हेनेवर यू फाइंड फ्री टाइम एंड देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर डिस्कशन लेटर। सो हियर ऑलमोस्ट आई एम कंक्लूडिंग, हो गया इसका। सो हियर वी सॉ व्हाटएवर, आई विल गो फास्ट। So foolish is a person, even though he knows that he will die today or tomorrow, knows that everything is temporary, but still spends his whole life in this temporary activities, temporary pleasure. He's always mad after this. He's foolish. But wise is not like that. A foolish person
He thinks that he is the doer, he is only the controller, he is the enjoyer. But why is understand what is his position? Actually, we are under control of this nature. So who is in control? That is his question. So this example is like how our life is temporary. ट्रेन जर्नी का एग्जांपल दिया है. अब एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, कितने घंटे बैठेंगे, उसके बाद तो बिछड़ जाएंगे. या so here another example. Here we are discussing about animal and human. So animal conscious कैसा होता है देखिए यहाँ पे. This butcher is one by one killing the animals, but still what is that animal thinking? But still it is busy in eating grass. You know, its intelligence works only how I can eat, how I can sleep, how I can mate, how I can protect. That's it. But अब उसके प्लेस में ह्यूमंस है और वो कैनिबल उधर काट रहा है, तो हमारा मेंटलिटी ऐसा नहीं होगा. Anyways, ऑलरेडी टाइम हो गया है. सो और कुछ क्वेश्चंस हैं? So till now we saw what is the suffering in our life. Now what is the goal of life? So goal of life, अभी तक तो साइंस से देखें तो कुछ पता ही नहीं है उनको. So for this question, we have to refer actually Vedas, what Krishna is telling. Krishna is telling first lesson that you are not this material body, you are imperishable soul. And Krishna says that your body is just like a shirt. It's like a covering which always changes, but you are not changing. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. हाँ, एक ही व्यक्ति है और जस्ट लाइक ड्रेस बदल रहा है वैसे उसका कवरिंग बॉडी बदलते जा रहा है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ टू ओल्ड एज. So in this way, Krishna says that the goal of life is to stop this cycle of birth and death, stop this temporary coverings, change of bodies. You are always same, so why not remain same? Why you have to change? So where we can remain same? Another world, that is spiritual world, beyond this material world. If we go through this material sky, practically it is not possible. But information is there. And also information is there in Bhagavatam. अभी यहाँ भूलोक से वैकुंठ तक कितना distance है? In kilometers it is given, in miles it is given. In this lifetime it is not possible. I mean, with mechanical means. हाँ, भागवतम में मैं पढ़ा 50 canto में description. From the planet which we are in, from here to the planet where Lord is residing in Vaikuntha, spiritual world, beyond this material sky. Finite. It is infinite. This is finite. Material world is finite. The 1/4, it is 1/4 of all universe. That's okay. What are you asking? Yeah, finite description is there. Yeah, distance is given. Find the same star and the distance. Yeah. No, humans can find by their own research work, but the information which is given in Shastra is different. Humans are finding galaxies. Yeah. At large distances. So you can also find that Vaikunt at that specified distance. ऐसा होगा तो अच्छा ही है. पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा उनको. Vaikunt is highest level of low. Vaikunt is highest. Highest means actually it is beyond this world. भूलोक के नीचे क्या था? According to description of Vedas, there are 14 planetary systems. भूलोक के ऊपर 7 और भूलोक के नीचे और 7. ब्रह्मलोक is the highest in this material world, material universe. Universe को बाहर जाएंगे, then you come into spiritual universe. No, the first you have said the 14 layers are there. पहला तो Vaikunt है. नहीं, ये 14 में कहीं नहीं है वैकुंठ. ये सबके बाहर है वो. इससे लेना देना नहीं है. अभी आप ब्रह्मलोक भी जाएंगे ना, the highest level, there also this is there, birth, death, old age is. ये पूरा यूनिवर्स का नेचर ही वही है. आप कहीं भी जाओ यही रहेगा. हाँ, लाइफ स्पैन होती है.
big manwar, one manwar. It's so much to be. ओके, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट वैसे भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बॉडी, आई मीन व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज सोल। सो आई कैन स्टॉप हियर। और कोई क्वेश्चन है क्या रिगार्डिंग व्हाट एवर वी डिस्कस्ड? What is the purpose of soul when it is vacuum? What is the? Purpose of the soul when it is vacuum? It's like asking what is the purpose of a criminal to come out of jail? वैक्यूम कॉस्मिक भी बहुत अच्छे काम करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, उनका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पस टू गो टू वैकुंठा? इट्स लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिमिनल टू कम आउट ऑफ जेल? Criminal is bound in jail. The whole purpose is to come out of jail. वैकुंठ जाना मतलब we are coming out of this, ये बंधन से बाहर आ रहे हैं ना। This whole is like What the soul will do after it reaches that? जेल से बाहर आने के बाद क्या करता है व्यक्ति? रियल लाइफ? नहीं नहीं, we are, actually the real life begins there. This is not real life. This is only suffering, because we are attempting to do activity to be happy, but are we getting happiness? No. But there we'll do activity. Life तो है, we are same person there. अभी यहाँ पे है same person, but there is no suffering. But there is no death also. No death, no birth, no death. That we are experiencing now also, no? Soul, see, अभी आप जन्म हुए आपका, तब आप छोटा शरीर था, अभी आप युवा हो गए, उसके बाद बुढ़ापा आएगा, लेकिन आप तो वही है ना। आप में चेंज हो गया, व्यक्ति तो वही है। So you are always there, same. Soul is always there. It is not conditioned for birth and death. Body is taking birth and body is becoming old, body is getting diseased, body is dying. But for soul, it is nothing like that. Nothing to do. In our real constitutional position, we are always eternal. Even in science, there were some scientists who discovered this matter, antimatter, proton, antiproton. You know, they discovered. They got Nobel Prize in 1950s, very long back. Prabhupada mentions about this in his book, Easy Journey to Other Planets. So they discovered the same thing. We are experiencing matter here, but there is something called antimatter also. And its nature is completely opposite to matter. Whereas matter has got some beginning, it is temporary, it will depreciate and it will finish at some time. But antimatter, it doesn't have any beginning, it will never end. वैसे ये डार्क मैटर भी कहा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर। Yeah, that is different. Antimatter is different. Antimatter, जो भी symptoms antimatter के बताए ना वो लोगों ने, it satisfies what Krishna explains about soul. Dark matter, yeah, dark matter से वो आता है ना, black hole बोलते हैं वो लोग, वो अलग है ना। क्या है डार्क मैटर के? डार्क मैटर बोला जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्स जो हम नहीं देख सकते, हम कह रहे हैं साइंस ये मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स बड़ा ही होते जा रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलप मतलब यूनिवर्स फैल रहा है वो डार्क मैटर में फैल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो साइंटिस्ट है कि वो पता नहीं लगा पा रहे हैं, बाकी आगे पता चलता है नहीं बोलते हैं कि नहीं, जो नहीं पता चलता है उसको डार्क मैटर के नाम पे उसको वो बस बंद करना चाहते हैं, जैसे फाइल क्लोज करके। वो इसलिए कहा जाता है यूनिवर्स बढ़ रहा है क्योंकि वो सारी आप जैसे टेलीस्कोप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अर्थ एक दूसरे सन के साथ एक अपने हमारे सन के डिस्टेंस है, हर सन के एक दूसरे के साथ डिस्टेंस है, लेकिन एक ग्रेजुअल बात ये हो रही है कि सबका आपस में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया सारी सर्कल में, तो होगा क्या कि अगर सारों की लोकेशन बदल गई, कोई पास आएगा कोई दूर जाएगा ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन फैक्ट ये हो रहा है कि सारे ही दूर जा रहे हैं, सारे ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कोई रेडिएशन स्टडी बोलते हैं, कोई रेड रेडिएशन करके बोलते हैं, तो उसमें वो डिस्टेंस मेजर किया जाता है लाइट पर, क्योंकि सारे स्टार्स के बीच का आपस में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ 1000 सालों बाद अर्थ से स्टार दिखना बंद हो जाए।
विजिबल रेंज से शायद कोई ना रहे उस टाइम पर अनएविटेबल हो जाए। और कंफर्टेबल बनाना रहना बट भागवत का एक्सप्लेनेशन काफी डिफरेंट है। अभी साइंस के हिसाब से तो दे से अबाउट वन यूनिवर्स, बट भागवतम डिस्कस अबाउट मल्टी यूनिवर्सेस. Multi universes. Now this one universe is there, and like this there are many universes, but not of same size. There are different sizes, big. कृष्ण जी ने सारे ब्रह्मांडों के मतलब यूनिवर्स के ब्रह्मा को बुलाया, हाँ. And ये फिफ्थ कैंटो में आता है about this astronomy explanation. How are the stars located and how are the planets located? तो इसमें information में आता है ये जो stars जो है they are also revolving. About science says same thing. But the whole universe इसके अंदर ये सब है. No. The whole universe, it's a fixed boundary. It has got a fixed boundary. It is like a, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मांड अंड जैसा है. It's like a spherical ball. Whole universe. In that we are there somewhere भूलोक में कहीं. Very insignificant. So universe expand हो रहा है ऐसा तो नहीं है. But there are many universes which are very big size. Lakhs of times size than this universe also they are there. वही पास्ट टाइम में आता है कि ब्रह्मा देखते हैं किसका सर तो ब्रह्मा का 1000 सर होता है, किसका 100 times 1000 times 10 lakhs heads 1 crore heads भी होते हैं. मतलब उतना बड़ा यूनिवर्स है और ये ब्रह्मा का तो सिर्फ 4 हेड है. That is sufficient for him to maintain this universe, to create and maintain. And the other Brahma has got 1 crore heads. कितना बड़ा होगा? So ऐसा description है. But every universe is fixed boundary, and all the universes are coming from the form of Lord. वो उनके ब्रेथ पे यूनिवर्स निकलता है और वहीं डिस्ट्रॉय होता हाँ. है. वो उतना टाइम तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये हम यही चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम अपने अनुमान से हम नहीं समझ पाएंगे. Beyond our intelligence it is. Of course we can try. If we come to that conclusion, it is much more, but it will take so many centuries. Okay, we can conclude here. 8 हो गया. as you stated, human gets bored when he do certain activities. Human gets bored when he Do certain activities regularly in this material world. yes. Once the soul reaches in the right cycle, so also they perform activities there. Yes. And they get bored. No. Here we get bored because the activity which we are doing is not actually related to our real self. It is just related to this material body. And because the body is always changing, so obviously whatever activity you do, you will not find interest. You won't change because there is change in the body, even in the mind. Your mind, your intelligence, this gross body which you are saying, everything is changing. So, and because the whole attempt is here in this world, you are trying to satisfy the body. So with the change of body, the tendency also comes. You want to change the activity. But there it is not like that. The body is always same. There is no change in the form. I mean, you can change the form also there by your own wish. That power is there. Is there a description what all capability a soul can have and Soul, see, वहां पे टेंडेंसी और यहाँ पे टेंडेंसी एक फर्क समझ जाए तो समझ में आएगा. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? We are trying to satisfy ourselves. You know, it is like in an artificial way. But there, we are really trying to satisfy ourselves because the whole consciousness is that you are trying to satisfy the Supreme Lord, and in that way, you are getting satisfaction. Here, you are trying to satisfy yourself, but there is no relation with Supreme Lord. Got the point? So there, the capabilities, the soul which has got, that is unlimited. Because for the satisfaction of Lord, he can take up any kind of activity, and he can also change his form in any form.
according to the desire of Lord. Once you Lord is unlimited. His desires are unlimited. To satisfy him, he can become also. He can change his form also. That capacity is there. Prabhupada explains about this. Spiritual form, it doesn't have any limitations. This material body, it has got limitations. I have desire to fly. I cannot fly with this body. Okay, you have desire to fly, you take bird body. Conditions are there. But that is not condition. There, it is unconditioned world. Unconditioned, unlimited. once the soul is satisfied, there is nothing to do next. Once the soul is satisfied. Satisfied, there is nothing to do next. वैकुंठ जाके सोल करता क्या भक्ति करते हैं ना हाँ एक्टिविटीज हाँ वास्तविक रूप भक्ति करते हैं एक्टिविटीज जो होते हैं वहां पे वो एक्चुअली शास्त्र बताया वो रियल एक्टिविटीज है यहाँ पे जो एक्टिविटीज है दिस इज नॉट रियल एक्टिविटी दिस इज नॉट रियल एक्टिविटी दैट्स व्हाई सी frankly speaking here soul is not satisfied there it is satisfied and in another sense it is not satisfied the satisfaction keep on increasing happiness keep on increasing अब ये कार्य किया उसमें बहुत आनंद आया और उत्साह बढ़ेगा और करूंगा क्योंकि आनंद बढ़ते रहेगा because supreme lord is unlimited his qualities his everything keeps on expanding and this world it is always limited conditions वहाँ पे everything keeps on expanding that's why their activities doesn't repeat everything keeps on changing everything keeps on expanding हाँ so जो activity अभी किया है वो activity कभी repeat नहीं होगा बाद में ever fresh अभी जैसे गोलोक वृंदावन में वर्णन आता है राधा रानी when she cooks for Krishna अभी इस मोमेंट में भगवान के लिए एक आइटम एक प्रिपरेशन बनाया that preparation will never repeat in future that recipe will never repeat that's why it's always ever fresh and there is also like this time scale is completely different we cannot understand there is no time at all past present future कुछ होता ही नहीं होता but how can there be many options can be a limited option because you have experience of limited we have experience of limited that's why difficult to understand about unlimited yeah में खाना बहुत अच्छा लगता है so at least उसके लिए तो वहां पे जाना है अब जैसे वर्णन आता है वहां पे अब यहाँ पे पेड़ है एक पेड़ से एक ही फल मिलेगा मैंगो ट्री से मैंगो ही मिलेगा पाइनएप्पल ट्री से पाइनएप्पल ही मिलेगा लेकिन वहां पे ऐसे नहीं कल्पवृक्ष होता है एक पेड़ से आपको जो चाहिए वो सब मिल जाए if you want to eat samosa that tree can provide one such sample but there everything is like that तो बोलते कल्पवृक्ष और जो मैंगो आता है that mango is seedless and skinless only pulp juicy हाँ ठीक है to stop here इसे ऑनलाइन में सब अटेंड करते कुछ पूछते ही नहीं कौन है सब ऑनलाइन क्लास रखते हो हाँ उधर ऑनलाइन क्लास सुना है कॉलेज का ऑनलाइन था ठीक है हरे कृष्ण